Good morning students. Today I am going to discuss the name of topic, that is discovery of electron. Our chapter atomic structure already going on, one class was already completed. Today I am going to discuss the name of topic, that is discovery of electron. How electron was discovered. Student, in yesterday class we did how atom was discovered and what is the Greek name of atom. Okay, but in today class we explained how electron was discovered. Student, discovery of electron. Discovery of electron. Discovery of electron. Okay. Discovery of electron. Electron, the name electron. Okay, student. The name electron was given by the name of scientist. Name was given by the name of scientist, that is Tony. And the electron was discovered. Electron was discovered by the name of scientist J.J. Thomson in the year 1897. Student, discovery of electron. Electron, the name of electron was given by the name of scientist Stoney, and electron was discovered by और स्टडीड बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट जे.जे. थॉमसन. इलेक्ट्रॉन का जो नाम किसके हिसाब से दिया, कौन दिए थे? स्टोनी दिए थे. कौन डिस्कवर किए थे? जे.जे. थॉमसन डिस्कवर किए थे. कब डिस्कवर किए थे? 1897 में डिस्कवर किए थे. ओके स्टूडेंट, हम कैसे पता करेंगे जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर वाज एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट, दैट इज cathode ray discharge tube. Cathode ray discharge tube. Okay, cathode ray discharge tube. Okay, what is cathode ray? What do you mean by cathode ray discharge tube? Cathode ray means what? Cathode ray means what? Cathode ray means what? A stream of negative rays, a stream of negative rays that travels from cathode electrode to anode electrode. Student, what do you mean by cathode ray? Cathode ray means a stream of negative rays or negative particles which travels from cathode electrode to anode electrode. एक नेगेटिव पार्टिकल है, कुछ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव पार्टिकल है और ग्रुप ऑफ नेगेटिव रेज है जो ट्रैवल कर रहे हैं किधर से किधर तक? कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रोड. कैथोड इलेक्ट्रोड क्या है? एनोड इलेक्ट्रोड क्या है? कैथोड इलेक्ट्रोड मीन्स इज ए नेगेटिव मेटल रॉड. एनोड इलेक्ट्रोड, व्हाट डू यू मीन बाय एनोड इलेक्ट्रोड? एनोड इलेक्ट्रोड मीन्स पॉजिटिव मेटल रॉड. पॉजिटिव मेटल रॉड. कैथोड इलेक्ट्रोड मीन्स नेगेटिव मेटल रॉड. एनोड इलेक्ट्रोड मीन्स पॉजिटिव मेटल रॉड. अच्छा, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. लेट्स टेक एन ग्लास ट्यूब. दिस इज एन ग्लास ट्यूब. ओके, दिस इज ग्लास ट्यूब and this is vacuum pump. Student, inside the glass tube two metal rods are there. Two metal rods. This is one metal rod, this is a metal rod, and this is a metal rod. And these metal rods are directly connected with battery.
These two metal rods are directly connected with battery. Student, this metal rod is called cathode electrode. Cathode electrode or cathode metal rod. This is called anode metal rod or anode electrode. Metal rod means electrode. Okay, anode electrode. And this is called battery. This is called battery. Student, cathode electrode emit negative particles or negative rays, so that this cathode electrode directly connected with negative terminal. This is called negative terminal of battery. Similar to this, anode electrode contains positive rays, so that anode electrode directly connected with positive terminal of battery. Positive terminal of battery, so that cathode electrode emits or transmits negative rays towards the anode electrode. But this cannot be observed or cannot be checked in our naked eye, or cannot be visible. How can you explain this? For explaining to migration of this negative rays towards anode electrode, we have to draw a small holes on anode tube. यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो anode ट्यूब है उसके ऊपर कुछ होल करेंगे. Besides this anode ट्यूब, हम क्या करेंगे, एनोड ट्यूब के पीछे में हम क्या करेंगे, एक कोटिंग करेंगे. इस कोटिंग को बोलते हैं जिंक सल्फाइड कोटिंग. दिस कोटिंग इज कॉल्ड जिंक सल्फाइड कोटिंग. ओके, बिहाइंड द एनोड ट्यूब जिंक सल्फाइड कोटिंग इज ऑब्जर्व्ड. दिस जिंक सल्फाइड कोटिंग इज कॉल्ड फ्लोरोसेंट. Or it is also said to be phosphorescent. Okay, student. For migration of this cathode rays or negative particles from cathode to anode is possible only at low pressure inside the tube and high voltage in a battery. That means this battery becomes 10,000 volt. Okay, 10,000 volt, which is high voltage. But inside the tube, pressure becomes low. That means low pressure. That means 10 to the power minus 3 mm mercury. This is the unit of pressure. mm mercury. तो ये क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए. क्लियर, प्रेशर होना चाहिए. अच्छा, inside the tube there is a number of gas particles. Let's take an example here. Inside the tube hydrogen gases are present. When we have to take low pressure, the gas particles are close together and bombardment occurs or striked with one another, which results the transmission of negative rays. तो इसके अंदर क्या है, गैस पार्टिकल है. कौन सा गैस, कुछ भी गैस हो सकता है. ठीक है, कैथोड रे कोई भी गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. कोई भी गैस आप ले सकते हो, इसके अंदर आप कोई भी गैस ले सकते हो. सपोज हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ले लिया. अगर हम लो प्रेशर में रखेंगे तो क्या होगा, जो गैस पार्टिकल क्या है वो पास आएंगे, उनके बीच में बम्बार्टमेंट होगा, स्ट्राइक करेंगे. तो जब स्ट्राइक होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव रेज ट्रैवल करेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड. ओके, एंड दिस नेगेटिव रेज passed through the holes of anode holes, passed through the holes of anode or anode holes.
एंड देन स्ट्राइक्ड विथ द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, एक लाइट डेवलप होगा, ए लाइट इज डेवलप्ड, लाइट इज डेवलप्ड, light is developed. That light may be greenish light, okay, greenish light, or orange light similar to this greenish light. If light is developed, then from that experiment we have concluded that electrons are transmitted from cathode to anode. अगर लाइट डेवलप हो रहा है तो हमको पता चल रहा है क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है कैथोड टू एनोड, ठीक है। दिस इज होल अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सारे क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, जो कैथोड रेज ट्रांसमिट्स और एमिट्स फ्रॉम दिस कैथोड इलेक्ट्रोड टू एनोड इलेक्ट्रोड to the anode holes. After that it is bombarded with zinc sulfide screen so that a light is developed, and from we have concluded that electron emitted from cathode to anode. Okay, this is whole about discovery of electron. Okay, thank you class, thank you. Like and share and subscribe.